Yes, miss, you are audible. ओके, आप लोगों को पता है अच्छा आपकी क्लास मैं लेने वाली हूँ. स्पीक आउट गाइस, सब चुप क्यों हैं? No, miss, we don't know. Good afternoon, बोलो. ma'am. गुड आफ्टरनून. ओके, so for my introduction, I am Sanjana Pandey. From today, I'm going to take your class of physics. Okay. Ma'am and previous sir. In previous, please repeat. Hello. Yes, miss. Aditya was saying something, I guess. Is my audio clear to you guys? Yes, ma'am. Then why? Ma'am, I was telling that previous sir will not teach us. I think no. I'm going to take your all classes of physics. Okay. Okay, ma'am. I'll be your teacher, and my name is Sanjana. Okay. So you guys are from which school? AG Church. No, miss. Two from Vincent and two from Patrick's, one from Loreto and one from EG Church. Why only one is responding, huh? Why the others are not responding? I love interactive class. Please respond to me, na. This will not be a class, na. One from muted from other side, and I'm continuously speaking. Yes, talk. Why are you quiet? Pratyush, Are why are you taking me only? Tell others also. don't Because you are my interact friend. among yourself. Don't interact among yourself. Interact with me. I'm your new teacher. Just let me know how you know have the knowledge, how you know about the subject. Then only I'll be able to teach you, na. Why everyone is quiet, huh? Shreyosh Paul, come on, speak up. Miss, Are what they? will speak? Huh? Miss, what I will speak? Aditya is only answering everything. Huh? So you also speak, na? I'm asking to everyone. I'm not targeting only Aditya, right? I'm taking everyone's name. Pratyush, Utsav, Rajshri. Speak up. So, what will start today? Motion graphical representation. Graph. Graphical. Before that, I think that you guys have cleared your concept about motion in one dimension. Yes, ma'am. It's Yes, clear. miss. Miss, this graph is a part of motion in one dimension. The chapter we have not completed yet. Yes, the chapter, the previous one, the previous part, you have cleared the concept, right? Yes, ma'am. Yes, So, ma'am, but shall I question you? actually, Hmm? sir told that he would be giving us more sums on acceleration and deceleration. Last day he taught the concept on That I'll provide you after the finishing of this chapter. But I'm talking about the concept. I am Yes, Yes, ma'am, yeah. it's clear. concepts are clear. So shall I question you guys? Will you respond to Yes, me? Yes, miss. yes, miss. Yes, Yes, ma'am. miss. Okay. Ma'am, you are Okay, going to let's ask numericals. no, obviously not. I'm not going to ask you numericals. I'm asking about the concept. I'll question you on the concept because I have to proceed with my next topic. Till then, I have to be familiar about how much you guys know about the similar topic, right? I cannot go in vain, na? Talking great topic. Yes, ma'am. Okay, then Acha, let me be clear that you guys are comfortable with English with Hindi or Bengali? Ma'am, English and Hindi, not Bengali. Miss English and English and Bengali. anyone Bengali? Ma'am, no Bengali. I don't understand Bengali. Speaking Bengali. Ma'am, everyone understand English and Hindi.
Miss, me English quite is the common offended. language. Everybody understands. Response me. I don't know individually, right? I don't know you guys individually. Please respond me. Miss, English is the common language. Everybody knows it. And Hindi also. Yes, but Understand it's in Bengali? partial. Hello. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay. Chalo. Let me answer me. Of the student only answer, okay? Not everyone. Mass is scalar or vector? Pratyush, answer me. Pratyush, Miss, can I? Can I say the answer? it's not, he's not present in the class. Answer then. Wait, Utsav. Sayan. Sayan? No. He left, I guess. Mehul, Ma'am, scalar. who answered? Who answered? Miss Rajashri answered. Did I ask you the answer? Please be very disciplined in my class, okay? Beforehand, I mentioned that the names whom I'll call, they will only answer me, okay? Please be very disciplined in my class. Shreyos, answer me. Yes, Miss. Distance is scalar or vector? Miss Vector. What? Miss Vector. Acha, distance is a vector quantity. Okay. Yes, Miss. Okay. Okay. And what is displacement then? Miss, you was asking me something. Hmm? Miss, you Yes, was Sayan, I asking. was asking you. Yes, Yes, miss. I was asking you, but the same time you left the class. So I'll come back to you again. Shreyos, Okay. let me be clear. Shreyos, unmute your mic. Yes, Miss. Distance, if distance is vector, then what is displacement? Distance I is was wrong. Miss, distance is the sector Distance quantity is and scalar. displacement is the vector. Displacement is vector. Make it very Yes, clear. Distance is scalar and displacement is vector, okay? yes, Miss, because distance cannot be represented in directions. Direction. Displacement requires direction. That's why displacement is vector, okay? Yes, Miss. What is the unit? No, not everyone will answer. Whom I'll ask, okay? What is the unit of speed? Mehul, answer me. Mehul is not responding as usual. Miss, yes, miss. Oh, you are responding. Okay, Meter per second. answer me. What is the unit of Miss, meter per very second. good? Very good. Instantaneous speed
Hello, ma'am. Miss, your voice was cracking. Yes, miss, My your voice voice is is not cracking. coming. Ma'am, but now you It's are okay not now. audible. Miss, what is the question? Is it am I audible now? Yes, Yes, miss. means Yes, miss. Then Sayan, answer me. What do you mean by instantaneous speed? When the speed of a body keeps on charging, its speed at an instant is measured by Changing. There it's changing. I am not asking you the correct definition. Instantaneous speed simply means when it acts for a very short interval of time. miss Okay? very short miss time interval or Time interval. interval. Just enough for it. I'm not asking you to write Miss, the I complete thought you definition. have to state the definition. Oh no, chalo. It's okay. Okay. So let me start. Let me question one more thing. Let me question one more thing. Acha, have you studied the three laws of motion? Equations of motion? Sorry, equations of motion. No, miss, it is not Miss. done in class, but we No, know ma'am. that. Was it mentioned in your syllabus? Yes, miss, it is there in our syllabus. In the same chapter? Yes, miss, in the same chapter, motion is one dimension. So it was not done. It was not covered by the teacher. No, miss, because we have done only till acceleration. Yes, After ma'am. that, After that, we have not done. But I was told to start from graphical representation. yes, What miss. is it? After acceleration, yes, we have miss. graphical representation only. Ma'am, in acceleration only last point. Yes, Let- ma'am. Sir told that he will start the acceleration. Let's just speak out now. What is the first equation of motion? If you know, if anyone knows about it, Aditya, Utsav, anyone? Yes, ma'am. Miss, displacement, miss, u equals to, sorry, miss, s equals to ut plus 1 by 2a t square. This is the equation to find the displacement. Utsav, your Miss, voice was not clear. Your voice was not clear. Please repeat it once more. miss, now is it clear? It is clear. Repeat it once Miss, more. the first equation is of motion is s equals to ut plus 1 by 2a t square. Now, dear, it is the second Ma'am, one. I can tell. Ma'am, Speak out. acceleration is equal to change in velocity by time taken. No, dear. I'm asking the equation of motion. I guess you guys have not covered it. Have you heard about V equals to U plus AT? Yes, miss. Ma'am, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. This one is the first equation of motion. Okay. Ma'am, A is equal to V minus U by T. A equals to V minus U by T. that is the same, na? V equals to U plus AT. That is the same thing. Miss, we have to remember these three equations in sequence, like we remember Newton's first, second, and third law, or we can remember it. Exactly. No. You have to remember in sequence. There was some reason why it has been discovered step by step, right? You have to remember. You Yes, cannot ma'am. make the Newton's first law to the second law and second law to the first law. It's not in our hands. It has been discovered step by step. Okay. The first one is V equals to Okay, U plus miss. AT. The third one is the second one is S equals to UT plus half AT square, and the third one is V square minus U square equal to 2AS. Okay. I'll come over it if it comes to the Yes, syllabus. Okay. Chalo, let me start the graphical representation of this question. Okay, of the chapter. Is it clear? My video is clear.
No, ma'am. It is hazy. Yes. Clear. It is clear, na? No, ma'am. It is hazy. No, miss. It is hazy. Please refresh your screen. Ma'am, it is showing that your network is only poor. I have refreshed here. I have refreshed. Now is it okay? Hmm? No, ma'am. Is, No, ma'am. is it not okay? No, miss. No, ma'am. What you can see? Ma'am, motion in one dimension is written, but it is Is very it written? hazy. We can see that it is written, but it's very difficult to read. I'm not getting your voice. I guess you need to refresh. Ma'am, you switch off your video and then again switch it on. Is it clear now? Ma'am, better than yes, ma'am. Miss, Now, better. Yes, ma'am. It's now clear. Better? yes, ma'am. Now, clear. It's better Yes, than the ma'am. previous. Now clear. Yes. Okay. Okay. So, shall I dictate the definition or shall I write them? I guess you are older Ma'am, enough. dictate. Dictation can help you to write, right? Yes, ma'am. Okay. Please listen. I love interactive class. Please don't mute yourself and sit like means an idol and I keep on shouting from the stand. Okay. I don't like that kind of a class. Please interact with me when I am taking a class. I'm not giving a lecture to you. Okay. My main motto is to make you understand you guys that what I am trying to teach you. So please interact with me. Don't interact among yourselves. Interact with me. Whatever the questions you have, ask it to me. I'll respond it in a very good manner. If you don't understand in the 100th time also, please ask me. I am here to make you understand. Okay. Your fellow mates are not going to make you understand in the class. Definitely they'll help you, but they'll help you out of the class. I am here to make you understand. So whatever questions you have, you ask me. I am here to confront them, each and every question. Okay. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please Yes, interact. miss. Okay. Chalo. Write the heading, graphical representation of linear motion. Write the heading, graphical representation. And say yes after writing, okay? Okay, Okay, ma'am. Miss, done. See, what I want to make you understand, guys. Why am I saying to respond you? For you guys to respond. I cannot see your faces, right? You guys have stopped your video. I cannot see your faces. So what am I teaching here from this end? I don't know. I cannot see your facial expressions. That would console me and that would help me to know that whether you have understood or not. This is not an offline class. This is an online class. So unless and until you guys respond to me that whether you have understood or not, whether you have written or not, shall I proceed or not? How will I know from this end? I cannot do blah 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 sitting from this one end, na? That would be a complete Yes, ma'am. unproductive class, right? So I cannot see your faces. So the main motto of this online class is to make you understand. And the process behind this is the interaction. Without interaction, I cannot make a single topic make you understand. Okay. So please interact with me. Whatever questions I ask, if I have asked you to write the heading of graphical representation, you guys need to say that yes, ma'am, completed. That then only I'll proceed, na? I'm not going to Ma'am, please wait 2 minutes and after that, start dictation.
No, no, that's Miss, not your possible. Miss, your voice is coming too fast and sometimes too slow. That's the network problem, dear. That's not my problem. Ma'am, now your video is clear. Yes, Ashni? Miss has not written anything, that is why. Please speak out. Please speak out. Miss, your video is clear now. Clear now. Okay, chalo. Thank you so much. Chalo. Will anyone see me what is linear motion? Miss, motion in one direction. I'm motion in one direction without changing its What- direction. and what is rectilinear motion? I'm going straight. I'm going straight. Is linear motion and rectilinear motion different? Ma'am, they are same. They are same. Anyone who disagrees? Miss, I think rectilinear means motion in one direction and linear means motion in straight line. And in straight line, two directions are there. So they are Yes, different. ma'am. No, dear. Rectilinear and linear, both the motions are same. It's just a synonym of the both are the synonyms. Rectilinear and linear are same. The motion in straight line is called rectilinear. The motion in straight line is called a linear motion. Okay? Okay, miss. Okay, chalo. Acha. What is graph? What do you mean by graph? ग्राफ के बारे में किसी को पता है? Is anyone aware about what is graph? चलो, right. I'm dictating, okay? Ma'am, on which we have x-axis and y-axis, horizontal and vertical. So why the graphs are being made? Graph. Why graph? Graph क्यों use करते हैं? Why it is being made? When why it is used? X and Y axis का काम क्या है हमारी life में? Ma'am, to display two things together like displacement and time or distance and time. To display. Okay. Miss, हाँ. Yes. Miss, we use it to represent a change which occurs in both the quantities. Is usually a change every time? No, miss. Variation. No, miss. No, Miss, it's some- not usually a change. The variations you can say. Yes, The miss. two quantities, the relationship between the two quantities, we use to the description is given by a graph. Okay. Chalo, let's write the definition first. I am dictating. Okay. A diagram. What is a graph? From here, start writing. A diagram. I'm dictating. Okay. Not writing. A diagram in which a line or Ma'am, can you please repeat? a diagram in which a line or a curve Ma'am, what you told, or a curve curve curve. curve Okay, ma'am. shows the relationship Ma'am, what is after shows the? Between two quantities comma measurements etc. Okay. Okay, miss. चलो okay. सबका हुआ Comma, है? measurement, then comma, etc. Why comma? Measurements, etc. Why would be there Okay, a ma'am. comma?
A diagram in which a line or a curve shows the relationship between two quantities, measurements, etc. Okay. Means graph is a diagram through which we help it helps us to know the relationship between two different quantities like displacement time, velocity time, acceleration time. I guess everyone has watched cricket now. Everyone has watched cricket now on TV. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In between the breaks or after the overs, there is a Ma'am, runs per over a graph game. pictorial representation. The pictorial Yes, ma'am. representation, that is called the graph. Why the graph is being made? To symbolize us, to make us, to summarize the total runs per over, as each one of us cannot remember ना कि first over में 10 रन बने, second वाले में 15, means we cannot remember individually that how much runs were made in per over, right? But once it is picturized in a graph, a pictorial representation is made, then we can be clear that how the runs have increased or decreased or anything else. Means it is just a symbol or a pictorial representation of some quantities. Okay. To make the things more easier. Otherwise it would have been more complex ना. If अगर मान लो कि अगर overs में हमारा एक over याद रखना पड़े या फिर वो बहुत ही ज़्यादा haphazard हो जाएगा. It would become a lot of haphazard it would create, right? But if it is pictorially represented, you can see from the graph that this at this time the runs were more, the graph has increased, and after a certain time, after 3 or 4 overs, the graph decreased as there were the falling of 2 or 3 wickets simultaneously. Okay. Yeah, ma'am. Why only Aditya is responding? Each and everyone is not Yes, ma'am. understanding. Miss, can you please repeat what you told after the definition of graph, Miss? For some reason, I was out of the meeting. Okay. See, what is graph? Graph is a pictorial. Your name is Ashni. Am I pronouncing it correctly? No, Miss, it's Oishani. Oishani. Okay, Oishani. Oh, sorry. See, what is graph? Graph is a pictorial representation. I hope you have also seen cricket, and after the overs, there is a pictorial representation of the graph. They display on the screen. Why it is made? It is made that we cannot remember the runs per over each and every. Do we have that memory that we would remember the runs in each over till the 50th over? No, right? Everyone cannot remember. So graph is made to make it easy to let us know that when the runs were increasing and when the runs were decreasing. So graph is just a pictorial representation of certain quantities that makes us easy to understand the concept. Okay? Yes, Yes, Miss. ma'am. Thank you. Okay. Yes, ma'am. Chalo. Let's proceed. We would study the 3 types of graphs, right? Right? There are 3 types of graphs we are going to study. The first one is Is the video clear? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. Chalo. Everyone has written the 3 graphs which we are going Yes, to ma'am. study. Ma'am, Okay. please, that is not complete. Okay, complete it.
मैम ये लाइट थोड़ा कम है। लाइट No, तो miss, कम ही है okay. बेटा, क्योंकि यहाँ Miss, पर okay, तो we can understand you. मौसम खराब है ना, देयर इज स्टॉर्म हियर, so please bear with it. I'm sorry I cannot help you out in this. Miss, the video ma'am. is clear. Ma'am, done. The Miss, the video is clear anyways. the video is clear or not? Ma'am, Yes, the video is clear Yes, only, ma'am. but the light is low. But the light It is needs so. I some light. cannot do anything with the light because here is a storm coming outside. Okay, the weather is disturbing a lot. Aditya, if he has any problem, he can increase the brightness of the phone. Then it might help. हाँ, is it full. might help. Ma'am, you can Aditya, you also on having- the flash. If I on the flash now, it would be difficult for me. Wait, let me try one. No, I cannot on the flash. Sorry. I cannot do that. Okay, ma'am, no problem. It is okay. Bear with it. Once the things get normal, I'll try to arrange. Is it not clear? You cannot see even. Miss, Ma'am, we we can. can see. Miss, Please but it would be better if there was light. Acha, it's okay. If you face any problem, ask me. I'll read it out for you. Please bear it with today only, for today. Okay. Okay, Miss. Miss, Okay, there are other kinds of graph also, like distance time graph and speed time graph. Obviously, there are distance time graph and speed time graph, but we are going to study the displacement time graph. And what is the difference between distance and displacement? We are going to study motion in straight line, right? Who was this questioning? Let me know. Who questioned me Miss this? Ahmad, sir. Okay. Yes, ma'am. Utsav, listen. We are going to study motion in one dimension. Here is motion in one dimension. Okay. So one Yes, dimension में क्या होता है? If there is a rectilinear motion, the distance and displacement are the same. The Yes, speed miss. and velocity, the speed and velocity are the same. There Yes, is no miss. If change. direction is same. If direction is same. So we are studying only one dimension. We are studying the linear motion. Yes, miss. But we are studying direction, sorry, motion in a distance. straight line. In a straight Miss? line, yes, motion in a straight line. And in a straight line, distance and displacement are same. If the Miss, they are motion is only same. They are only same when direction is same. And in a straight line, two directions can be there. But we So are always studying only the direction in the same direction, na? We are studying motion in a straight line. हम लोग ये straight line में पढ़ रहे हैं. Are we going to study that if a car is there, it will move in this direction also and in this direction also? Is it possible? मैम, ऐसा कोई ग्राफ नहीं है हम लोग को बुक में. तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि अगर एक पॉइंट पर हम खड़े हैं और हम एक ऑब्जेक्ट का हम अगर ग्राफ पढ़ रहे हैं. लेट मी बी वेरी क्लियर. उत्सव, listen to me. अगर हम एक ऑब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं, if there is a car, so the car will move only in one direction. It will not go in two directions. So Yes, the miss. concept of distance and what you said, speed. Displacement. So where it will come? हाँ, where it will come? No, वो तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि distance और displacement तो same ही रहता है उसमें. और displacement हम लोग इसलिए use कर रहे हैं because we are mentioning the direction also here, whether in this direction or whether in this direction. We are mentioning the distance direction also. इसीलिए we are using displacement and velocity term. Speed and distance का तो कोई use ही नहीं है यहाँ पर. It's of no use. Okay, miss. Am I clear? Yes, miss. Okay, chalo. Put the heading of. Excuse me, ma'am. Then only for this chapter we will learn these 3 types of graphs. There are lots of types of graphs there. There are pie charts, bar diagram, histograms. A lot of graphs are there. But for you in your syllabus, only these 3 types of graphs are mentioned. Okay, ma'am. There are lots of graphs. We cannot study it in even one class or 2-3 classes. There are lots of graphs. But for in your syllabus, as far I know, these 3 graphs are mentioned. If I'm not wrong.
Yes, ma'am. Yes. You guys, Ma'am, they you are guys talking like that. They have not opened the book only. Hmm? Yes, ma'am. These three graph are only in our book, not other. That's the thing. That's the thing. Chalo, give the make a bullet here after writing this and give the heading placement time. Okay. Okay, ma'am. Yeah, ma'am. Chalo, write it. In displacement time graph, Ma'am, we will need graph paper. no. In my class, it's not required for graph paper. You require graph paper basically in maths only. In physics, there is no requirement. Ma'am, can you please repeat? I did not say anything. Miss, you told that in displacement time. Chalo. I'm starting. In displacement time graph, in displacement time graph, time is taken on the x-axis and displacement of the body taken on the y-axis. I repeat once more. In displacement time graph, time is taken on x-axis and displacement of the body is taken on y-axis. Is it clear to everyone out there? Yes, ma'am. Have you Yes, written it? miss. अच्छा, Yes, अब miss. मुझे बताओ, what is x-axis and what is y-axis? Are you guys familiar with this concept? Yes, miss. Yes, miss. Pakka. Shall I go deep into it or I should proceed? No, miss. Clear. Miss, we have done in Ma'am, you math. can proceed. X Okay, I axis, can Y axis. Chalo, okay. Wait, let me ask someone. Who is not responding? Is Mehul responding in our class? Mehul, Yes, miss. Yes, miss. have you the concept of x and y axis? Yes, miss. Okay, Pratyush, Yes, miss. Shreyosh, Yes, miss. चलो चलो तो मतलब सभी रिस्पॉन्स कर रहे हैं. That's very good. Thank you guys for this much of understanding. Chalo, write the next point. Slope of displacement time graph. Ma'am, can you please repeat? I'm writing it. Chalo. Slope of Miss, can you please dictate it? slope of displacement time graph gives velocity. This you guys need to remember. Slope of displacement time graph always gives velocity. Clear?
Yes, miss. How the slope will give you velocity? Displacement. It's because displacement by time is velocity. So maybe. Yes. Ashni, you are answering, right? I guess there is only one girl in our class, na? Yes, miss. Yes, ma'am. No other girls. Why so? लड़कियां क्यों नहीं है क्लास में? मैम आईसीएसई का स्कूल ही नहीं है उतना, 2 ही स्कूल है। अच्छा, इसीलिए लड़कियां मतलब 2 स्कूल क्यों? एजी चर्च भी तो है भैया। एडिटर से तो एक ही लड़की नहीं है, बस एक ही लॉरेटो से है। लॉरेटो से बस एक ही लड़की है, दैट इज मी। ओके, चलो कोई ना। आई एम आल्सो अ गर्ल इन योर क्लास फ्रॉम नाउ, ओके। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। So then the displacement time graph, slope means displacement by time, gives us velocity. So the slope of a displacement time graph gives us velocity. Clear? Yes. Clear, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Write the next point. You guys answer me. If slope is positive, then if slope is negative. Wait, let me question someone. Not Utsav, not Aditya, not Ashni. Rajashri, you answer me. Yes, ma'am. If this, what happens if the slope is positive? What could you conclude from a displacement time graph if slope is positive? What you told? What would you conclude from a displacement time graph if the slope is positive? No, Utsav, not right now. Wait, chalo Utsav, say it. Miss, the velocity will be in positive direction. Velocity will be in positive direction. That does not make any sense. Ma'am, can I tell? Who, Aditya? Yes, Check out there. ma'am. If slope is in positive direction, means the velocity is increasing. Velocity is increasing. Yes, velocity is increasing means body is moving. Body is moving away from the sea. If this is graph is clear ना? Video clear आ रही है? Yes, ma'am. हाँ, Yes. अब देखो. Slope is positive. Slope को कहा गया है कि positive है. ये हमारा x axis हो गया. ये हमारा y axis हो गया. Slope अगर positive है, मतलब this is the slope positive. मतलब यहाँ से body जो है अपने origin से, the body was starting from here. The body is moving away from the starting point. Yes, ma'am. Clear? Yes, ma'am. And if the slope is negative, this is x-axis, this is y, this is time, this is displacement, this is time, this is displacement. If the slope is negative means the body is moving away from its starting up point. to It time. is moving away. It is moving away from the starting point. Am I clear? Yes, miss. Yes, ma'am. Ma'am, Miss, I couldn't understand the the second. video is becoming hazy. Miss, Excuse me, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Now clear. Clear? Ma'am, I can't understand the second point if slope is negative. Slope is negative. Okay. Let's take an example of a ball. Ball खेला है कभी? Yes, ma'am. Yes, miss. Many times. Oshni खेला है कभी ball? Yes, miss. Basketball. Ma'am is talking cricket.
No, I'm talking about Miss the is basketball. talking only. baseball. No. Then tell football only. Are you playing with any ball? Is it? Yes, I've played. Listen. Catch. Let's no catch. Chup raho. Miss, then what kind of game? Listen, चलो. Ball को tap कर रहे हो. You're tapping the ball, okay? ठीक है. When you have thrown the ball is going away from you. Okay. Yes, This miss. is the position of the ball going away from you. You have thrown the ball. मतलब the slope is positive. Yes, ma'am. And when the slope is negative, मतलब the ball is coming towards you after the tapping. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Maybe. Am I clear? Am I clear? Miss. Yes, ma'am. Ashni, am I clear? Yes, miss. Means Akka? the slope is negative, then velocity is also decreasing. Velocity is decreasing. Velocity decrease कर रहा है. Yes, that means in basketball, when we and then come back to us, then the slope is negative, and when it goes, Not only in the case of the ball. Not only in the case of the ball. There are a lot Yes, of cases. all that's why I told. The velocity is decreasing. मतलब velocity will ultimately the velocity will decrease, and once there will be a point when the velocity will come to zero, the ball will come at rest. There will be a point, na? Then the ball will come at rest. Yes, This was miss. the positive slope. This was the positive slope. This was the positive slope, and this is the negative slope. है कि नहीं? Yes, miss. Clear? Miss, excuse me. Yes. बोलो. Yes, you told that when the slope is positive, what we can know from it? When the slope is positive, what we can know from it? The body is moving away from the starting point. Starting point से body दूर जा Okay, रहा है. miss. Okay, miss. Miss, and its velocity is increasing. Velocity is increasing. Definitely, velocity is increasing. No, miss. Actually, which kind of graph it is? It is a displacement time graph. Okay, miss. In displacement time graph, if the body is slope is in the positive direction, miss, we can only conclude that the velocity is in positive direction. The straight lines, the velocity is constant. It is not increasing, miss. The displacement is increasing. The displacement, the body is moving away from you. So if the body is moving away from you, then the body is going away. It Yes, miss. definitely has some velocity. It definitely has some velocity. Then only this or the slope is positive. That's what Yes, I'm miss. trying It to say. definitely has some velocity. Yes, that's what I have made you Miss, right you now. said that the velocity is increasing. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I have said you if the slope is positive, the body is moving away from the starting point, and if the slope is negative, the body is coming towards the origin point. This was my prime motive to make you understand. The velocity increased, it went here, and again when it will come to you, it will again be the slope will be negative. This is the slope negative. It is coming towards the starting point. This will be the starting point only. This is just the time lapse what you will show here. That was my prime motto to make you understand. If the slope is positive, slope अगर positive होगा, body starting point से दूर जाएगी, it will move away. And if slope is positive, slope is negative, body will move towards. मैम वो जो स्लोप के बाद जो लिखी है वो नहीं दिख रहा है, वो वीडियो से बाहर है. Miss, please move the camera. Miss, हाँ मैम अब दिख रहा है. अभी क्लियर है? Yes. ये रफ में लिखा है, ये तुम लोग लिखो मत. यहाँ जो miss, लिखा था ना, यहाँ जो लिखा था, Yes, स्लोप इज पॉजिटिव. हाँ, इसके बाद ये सब कुछ ड्रॉ नहीं करना है. यहाँ जस्ट लिखो स्लोप इज पॉजिटिव. miss, I have drawn.
You have drawn. No, miss, I have not drawn. I was Yes, waiting for you. actually, once I do in my rough copy and then I fair it in my physics copy, so I don't have any problem. I can get it away. Acha, chalo. Then write it here. If slope is positive, the body is moving away from starting point. Write it here. The first one. The body is moving away from starting point. Actually, what you said, that if the slope is positive, the body is moving away from the starting point. Starting Miss, point. you also said the velocity is No, increasing. I did not say this. Who I said. Aditya said, I guess. I did not say that. Why would I say that? How velocity will be increasing? Velocity is going in the same direction. I'm talking about the uniform. I'll come when the velocity will be increasing. I'll come to that graph also. I have that graph with you. I'll come to that graph also when the velocity will increase. Yes, miss. And the second point is, No in problem. the last page, you wrote that if slope is negative, the ball is coming towards the initial point. Towards the starting point, yes. The Miss, second, is it true that the when first, the slope is negative, that means the body is returning miss, towards is the it true starting that point. when the slope is Negative. okay, miss, and that means whenever the slope is negative, the body is coming towards its negative point? Rest, towards Okay, rest. miss. Just if the slope is negative, that simply means the body is in a retarding position. It is decelerating or it is coming towards rest. Rest means towards the starting point from where it has started. Okay, miss, from where it has started. Miss, is it in all cases? Miss, all in cases, slope negative means, whenever the in all, slope is negative? whenever the slope is negative, you can conclude till your syllabus, you can conclude that the body is coming towards the starting point. Slope negative in the distance, displacement time graph. Means body is Miss, coming towards the negative, towards the starting point. मतलब जहाँ से Miss- शुरू करा था बॉडी फिर वहीं पहुंचती है. Miss, sorry for inconvenience, but can you show us the page which you were writing, the next page? This one. Yeah, miss. Miss, please draw the y-axis downward. Miss, please draw the y-axis downward. Okay. Then. Negative y-axis. Hmm. Miss, in that same figure. Yes, miss. So now this is negative y-axis, that the displacement is being covered in the negative direction. So the slope of the graph formed in this graph will be also negative. So in this case, I'm not the getting your slope point. is I'm not negative, but getting your point. then also the body. एक second. I'm not getting your point. Your voice is not clear, and I'm not understanding even what you say. If the graph, अगर मैं ग्राफ को ऐसे उल्टा कर दूंगी तो इसका पॉजिटिव मींस इसका नेगेटिव होगा ना? Why are you confusing this Okay, with miss. that? No problem, miss. इसका जो positive- Actually, मैम एक y का complex आदमी. हाँ y को उल्टा हम खींचेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो नेगेटिव y एक्सेस होगा. हाँ तो इसका जो पॉजिटिव होगा ना, मतलब इसका जो नेगेटिव होगा, अगर आप इसको मिरर इमेज में नेगेटिव वाई डायरेक्शन में करोगे तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा ना. वो तो बात हम ना वो नहीं कह रहे, ठीक है. ओ 0 इज टेकन एज द इनिशियल पॉइंट, और अगर हम एक डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव, क्योंकि इनिशियल पॉइंट के सामने हम दो डायरेक्शन ना ले सकते हैं. मींस एक पॉजिटिव जो आप पॉजिटिव वाई से रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो अभी हमको दिख रहा है, एक नेगेटिव वाई भी तो होगा मैम. उस पे जब आप एक बार थोड़ा सा ड्रॉ कर दीजिए नेगेटिव वाई एक्सिस. हाँ नेगेटिव वाई ड्रॉ करा, इसमें ही कर दिया नेगेटिव वाई. मैम प्लीज एक नेगेटिव वाई एक्सिस ड्रॉ करें. हाँ यस करा. मैम. या मैम, अब आप उस नेगेटिव एरिया को, जो नेगेटिव एरिया है, उसमें एक ग्राफ बनाइए. बेटा मुझे एक बात बताओ. ग्राफ इन द नेगेटिव एरिया, इन द नेगेटिव. मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ. ये क्या है तुम्हारा डिस्टेंस है? डिस्टेंस क्या आप कभी भी नेगेटिव ले सकते हो? डिस्प्लेसमेंट है. मैम डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं. तो आप क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ले सकते हो कभी?
कभी भी हो सकता जी मैम बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में 2 डायरेक्शन होता है, है। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव negative हो सकता है। भी नेगेटिव भी। पहले कौन कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? लेट मी नो उत्सव। मिस डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव, यस मैम। हाँ अच्छा, ये ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, यस मैम, हो सकता जब है रियलिटी में कैसे? हो सकता है तो ग्राफ में क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, ग्राफ में अगर आप डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लोगे तो आपको लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, अच्छा मुझे बताओ, मुझे अब ग्राफ में बता रहे हो, मुझे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताओ जहां पर आप डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ले सकते हो। या मैम व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? लीनियर मोशन। बॉल है, हम लोग लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, यस मैम, लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर। यस मैम। तो रेक्टिलिनियर में ऐसा कौन सा केस है जहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा? या मैम एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे आवाज एक इनिशियल पॉइंट है ए, जो बॉडी का, बेटा आवाज कट रही है, फिर से अपना ऑडियो ऑफ करो, फिर बस से अब ऑन आ करो, रही है? फिर से। हाँ अभी आ रही है, बोलो अभी। या मैम एक 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 स्ट्रेट लाइन है मैम, जिस पे पॉइंट है ए। मिस क्या ड्रॉ करके देखता हूँ वीडियो तुम्हारी ऑन। आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, तुम्हारी आवाज बिल्कुल क्लियर Your नहीं है। voice is Ma'am? cracking. Utsav, your voice is Miss, Screen share करके तुम्हारी आवाज बिल्कुल समझ No, again cracking. it's cracking कुछ more. समझ नहीं आ रहा। Screen share करके Can you बोल दो. write it down? मिस अब आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बोलो बोलो। या मैम एक ऑब्जेक्ट है जो एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे एक पॉइंट है ए। ओके मैम, मैम बोलो। ए इज द इनिशियल पॉइंट, उसको हम इनिशियल पॉइंट मान रहे हैं जहां से हम कंसिडरेशन ले रहे हैं, ठीक है। ए पे एक बॉल है, ओके मैम। आप ए के दूसरा साइड भी तो लाइन एक्सटेंड कर दीजिए मैम, ए के दूसरा साइड लाइन कर दीजिए। या सो हम लोग पढ़े हैं कि इसमें with respect to a there are 2 directions possible, एक उसके राइट होगा, एक उसके राइट में एक डायरेक्शन है जिसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं, एक उसके लेफ्ट में भी तो डायरेक्शन है हम जिसको नेगेटिव मान रहे हैं। तो जब बॉल राइट तो हम कहेंगे डायरेक्शन इज इन डिफरेंट इज इन डायरेक्शन, और जब नेगेटिव में जाएगा तो हम कहेंगे जब राइट में जाएगा, राइट में जाएगा। तुम्हारा वॉइस क्रैक कर रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा. Voice is cracking. तुम्हारी आवाज कुछ समझ में नहीं आ रही है। मैम और अगर वो राइट में होके लेफ्ट में आएगा भी तो डिस्प्लेसमेंट तो वापस 0 हो जाएगा, जो कि हम लोग ग्राफ में दिखा ही रहे हैं. हम लोग तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तुम ये क्या कहना चाह रहा है? मैम ये तो डिस्टेंस बोल रहा है कि अगर राइट में जाएगा फिर लेफ्ट में आएगा, क्या क्या तो फिर पॉजिटिव, और उसको अगर फिर से लेफ्ट में जाएगा तो वो नेगेटिव हो नहीं सकता. नेगेटिव क्यों होगा भैया? ये तो बात तो वेरी क्लियर है, नेगेटिव क्यों होगा यहाँ पर? अगर ये हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, अगर ये राइट में गया और फिर ये लेफ्ट में आया तो इसका और इसका तो फिर 0 हो जाएगा ना। Cannot be negative. हम लोग तो स्टार्टिंग को एक यहाँ पर ले सेकंड, रहे हैं। आवाज आ रहा है? हाँ अभी आवाज आ रही है, बोलो। या मैम स्टार्टिंग पॉइंट ये है, दो डायरेक्शन पॉसिबल, दो आ सकती है, योर वॉइस इज क्रैकिंग जा अगेन. सकती है, इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन बोल। अच्छा मैम listen, हम राइट को पॉजिटिव डायरेक्शन बोल सकते हैं। राइट मेरा पॉजिटिव Yes, डायरेक्शन है। ma'am. हाँ मैम लेफ्ट को हम नेगेटिव मान सकते हैं कि नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू ए मान सकते हैं? मान सकते हैं, हाँ हाँ। ठीक है मैम, अब हम केस नहीं दोनों डायरेक्ट जा रहा है, हम ऐसा केस बोल रहे हैं जिसमें पहले, या मैम अगर ए
जो हाँ। बॉल है वो हाँ। राइट में जाता है, तो हम बोलेंगे कि बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है वो हाँ। पॉजिटिव डायरेक्शन में है। हाँ। ठीक है मैम। लेकिन अगर बॉल अपने इनिशियल पॉइंट ए से लेफ्ट जाता है तो हम नहीं तो नेगेटिव अल्टीमेटली जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे उस हैं। टाइम लेफ्ट को Ultimately, पॉजिटिव मानेंगे तो ही ना जी मैम। वो एग्जाम में हम लोग को 4 टाइप का हम ग्राफ लोग तो ही ना देगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना। मैम आप कैसे भी भाई आवाज केस तो हम एक से कंसीडर कर रहे हैं। मैम एग्जाम में तो वैसे भी ऐसा ग्राफ रहेगा, इसमें नेगेटिव दिखाएंगे भी कैसे अगर नेगेटिव रहेगा तो। Yes. मैम और एग्जाम में वैसा पूछेगा भी नहीं, उसके Yeah. लिए बहुत बड़ा Yes, ग्राफ चाहिए। नहीं, Yes. ये क्या कहना चाह रहा है मुझे पहले वो तो सुनने दो, मुझे वो तो समझ में आने दो कि वो मैम कहना ये क्या बोल चाह रहा रहा है कि जैसे अगर राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है तो स्लोप ऊपर कर रहे, पर अगर वो लेफ्ट में जाएगा तो भी नेगेटिव होगा, तो स्लोप पीछे करने के लिए है। अरे तो तो फिर जगह ये फ्रेम पकड़ेंगे ना हम लोग तुम लोग क्या पकड़ रहे हो, हम लोग क्या पकड़ रहे हैं कि किस टाइम पर वो कितना डिस्टेंस कवर किया ये ऑब्जेक्ट। अगर वो 0 सेकंड पे 20 मीटर ट्रेवल किया तो 10 सेकंड के बाद अगर 40 मीटर ट्रेवल किया, हम लोग डिस्प्लेसमेंट पकड़ रहे हैं। हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, डायरेक्शन देख के थोड़ी प्लॉट करते हैं। और फिर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट 10 सेकंड के बाद वापस यहाँ पर आ गया 40 सेकंड में, अगर वो वापस इस डायरेक्शन में जा रहा है तो और यहाँ पर भी अगर वो 40 चला गया तो 40 सेकंड में तो ये डिस्प्लेसमेंट 0 कम हो हो गया। जाएगा, वही मैम हाँ, 0 हो जाएगा। 0 मीटर हो जाएगा। तो फिर हमारा ग्राफ कैसे आएगा? ग्राफ फिर और नीचे ग्राफ करना, ऐसे जाके सीधे नीचे आ जाएगा। वही मिस तो अब हम आवाज लोग भी आ बोल रही रहे, पर ये समझ ही में नहीं आ रहा है। वो समझ में आई बात? है? मिस आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, फिर भी शिवर कर रही है। Video is hazy. ठीक है मैम। या तो आप कहाँ से आप बोल रही है ना 40 मीटर पीछे चला जाएगा। मैम हम ए से कंसीडर कर, अभी ऑब्जेक्ट ए पे है ना, ए से वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाए बिना हम लोग डेटा से सुनो उत्सव, सुनो। हम लोग डेटा से, हमें टाइम चाहिए और हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हमें ये 2 क्वांटिटीज चाहिए और इन दोनों की क्वांटिटीज के आधार पर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। करेक्ट? अगर 0 सेकंड पर ये मान लो 0 पर था, ठीक है, 0 सेकंड पर ये ऑब्जेक्ट ने 0 ट्रेवल करा था, ये तुम्हारा बॉल। Ma'am, your video is stopped and your voice is also not coming. Miss, we can't hear you. के बाद ये अगर ये बॉल यहाँ मिस पर आ आपका जाता है, वीडियो यहाँ पॉज पर हो आ गया जाता था और आपका कुछ आवाज भी नहीं आ रहा था। है, रुको। सॉरी आदित्य, यस मैम। उत्सव का है? उत्सव है मैम, चुप है। देखो उत्सव, आप क्या कहना चाह रहे थे? ये मेरा बॉल है, ये मेरा बॉल है, ठीक है। आई थिंक तुम यही पूछना चाह रहे थे, जहां तक मुझे समझ में आया। ये ए पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट है, 10 सेकंड में वो यहाँ गया। Your video is hazy. नहीं मैम 10 सेकंड में वो उधर नहीं गया, 10 सेकंड में वो दूसरे डायरेक्शन में गया। इधर गया बॉडी, ये ऑब्जेक्ट इधर गया, ये इधर उधर गया, गया, मतलब इधर नहीं गया। चलो 10th में यहाँ गया और उसके बाद बस मैं वहीं गया, उतने से मेरा पॉइंट, उतना ही मेरा पॉइंट है मैम। 10 सेकंड में वो उधर गया। तो क्या फर्क पड़ता है? हम लोग ऑब्जेक्ट के फ्रेम को नहीं देख रहे हैं कि हमारा यहाँ से एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बनेगा।
हम लोग ऑब्जेक्ट जहां जा रहा है उसके फ्रेम से नहीं देख रहे, हम लोग डेटा चाहिए, वी नीड डेटा। हमारे पास 10 सेकेंड में अगर बॉडी 20 मीटर ट्रेवल करा तो मतलब हमारा ग्राफ यूं बन जाएगा, यहाँ 10 सेकेंड, यहाँ 20 मीटर, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, यहाँ पे टाइम है, यहाँ 20 मीटर, यहाँ 10 सेकेंड, तो बॉडी यहाँ पर यहाँ पहुंच जाएगा। 10 सेकेंड में बॉडी ने 20 मीटर ट्रेवल करा, मैम ये आपका हमारा हो वीडियो जाएगा। इजी है। मैम आपने ये वेट वेट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया है। हाँ तुम बुक में क्वेश्चन देखियो कैसे, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। मैम आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है या नहीं? डेफिनेटली होता है, डिस्प्लेसमेंट में तो डायरेक्शन होता ही है। डायरेक्शन होता है। आपका डेटा क्या कहता है? 10 सेकेंड में 20 मीटर चला। आपका डेटा तो ये बता ही नहीं रहा है कि किस डायरेक्शन में चला। मैम बुक में भी तो जो डेटा जिस हिसाब से दिया उसमें भी डायरेक्शन नहीं दिया है, उसके पास बुक है तो वो खोल के देख ले। मुझे एक बात बताओ, तुम क्या ग्राफ में से बता सकते हो कि बॉडी नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल कर रहा है कि साउथ ईस्ट ट्रैवल कर रहा है कि साउथ वेस्ट ट्रैवल कर मैम रहा है? नेवर। यस मैम बता सकते हैं। या मैम बता सकते बता सकते हो कि बॉडी साउथ ईस्ट ट्रैवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैम साउथ ईस्ट तो तब ना आएगा जब 3 डायमेंशनल है। 1 डायमेंशनल में क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ग्राफ देख के बता देंगे। 2 डायमेंशनल में पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, बस उतना बता पाओगे? मैम बुक में एक बार क्वेश्चन देखिए ना, बुक में तो क्वेश्चन एक फ्रीक्वेंसी टेबल जैसा बनाया हुआ है। सुनो उत्तर का कंसेप्ट मुझे क्लियर करने दो। वो कहना चाह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट में चूंकि डायरेक्शन है, बेटा ग्राफ में आपका डायरेक्शन बता सकते हो मुझे? मेरा ये डायरेक्शन यहाँ से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये कहीं नहीं कहा गया है। मेरे ग्राफ में ये पॉजिटिव है, मेरे ग्राफ में ये जगह पॉजिटिव होती है, ये जगह नेगेटिव होती है, बट मेरे बॉल के इस फ्रेम में कहीं नहीं कहा गया है कि हम यहाँ से अगर स्टार्टिंग पकड़ेंगे तो ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। मेरा मन में बॉल को यहाँ पकड़ूं, मेरा मन में बॉल यहाँ पकड़ूं, मेरा मन में बॉल यहाँ पकड़ूं, तो व्हाट? मैम कहीं भी पकड़े, डायरेक्शन का चॉइस तो मेरा है ना मैम, डायरेक्शन का चॉइस तो मेरा है। डायरेक्शन तो आप डेटा के हिसाब से मैम कैन आई टेल वन थिंग? हाँ बोलो। मैम हम लोग का बुक में जैसे क्वेश्चन दिया है ऐसे दिया, जैसे टाइम दिया है फिर उसके नीचे डिस्प्लेसमेंट लिखा, फिर एक फ्रीक्वेंसी टेबल जैसा टाइम 0 सेकेंड, फिर डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर, फिर 240 फिर 440 ऐसे करके। ऐसे नहीं है कि पॉजिटिव गया फिर -40 गया नेगेटिव, ऐसे नहीं है। वैसे होता ही नहीं है बेटा, वैसा होता ही नहीं है, तो वैसे कैसे देगा बुक में? मेरे पास तुम्हारी बुक नहीं है, मुझे नहीं पता है, बट मुझे इतना तो पता है कि हाँ वैसा होता नहीं है, तो कैसे बुक में देगा? उसके अकॉर्डिंग, उत्सव के अकॉर्डिंग, उत्सव सुनो, उत्सव तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम इस डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग मेरा जो ग्राफ है वो यू बनना चाहिए, राइट? लाइक ऐसा, राइट? यस मैम। ऐसा नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं बन रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बॉडी तो पॉजिटिव ही मूव कर रहा है ना। अगर तुम नेगेटिव लोगे, मैग्नीट्यूड अगर लोगे डिस्प्लेसमेंट का, हम लोग यूज फिर क्यों कर रहे हैं? अगर हम लोग नेगेटिव में ही यहाँ पर डायरेक्शन लेंगे और फिर हम लोग यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी भी हमारी नेगेटिव में आएगी। वेलोसिटी भी नेगेटिव में आएगी। क्यों नहीं हो सकता है? वेलोसिटी नेगेटिव क्यों? वेलोसिटी नेगेटिव मतलब क्या? नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी। मैम हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन बोला मैम? नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी क्यों नहीं ट्रैवल कर सकते? मेरा वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही क्यों होगा? मेरी मर्जी, मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता हूँ। अगर तुम नेगेटिव में लोगे तो तुम्हारे लिए जो आगे का कैलकुलेशन करना होगा वो तुम्हारे लिए और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैम कॉम्प्लेक्स की बात नहीं, हो सकता है या नहीं? हाँ, अगर तुम ग्राफ नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो तुम लोगों को पढ़ना है वो तुम्हारा ग्राफ पॉजिटिव में ही पढ़ना है, एक्स वाई और एक्स ऐसे ही पढ़ना है। अगर तुम कॉम्प्लेक्स करने के लिए, बनाने के लिए जाओगे और तुम अगर ऐसा नेगेटिव लेकर के करोगे तो दैट वुड बी अ रिगरस प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि तुम लोगों को यहाँ से स्लोप निकालना है और स्लोप निकालने के बाद तुम्हें तो हमेशा मैग्नीट्यूड लेना है, तुम्हें तो डायरेक्शन लेना है, तो डायरेक्शन तो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, तो इस वजह से हम ग्राफ में भी नेगेटिवली प्लॉट करेंगे। दैट इज नॉट द मैटर। हम ग्राफ में नेगेटिवली प्लॉट नहीं करते हैं, हम ग्राफ में पॉजिटिवली ही प्लॉट करेंगे। मैम एक्चुअली ये पॉइंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने कुछ देर पहले कहा था कि नेगेटिव अगर स्लोप नेगेटिव है। मैम इस केस में जो हम बताए उसमें स्लोप नेगेटिव है।
देखो बेटा, Excuse me. स्लोप नेगेटिव मतलब क्या है? स्लोप नेगेटिव मैं कह रही हूँ, मैं नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रही हूँ, मैं स्लोप बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पर स्लोप तुम्हारा बढ़ रहा था और इस डायरेक्शन में स्लोप डिक्रीज हो रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि स्लोप तुम्हारा नेगेटिव फ्रेम में जा रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, पहले से कम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्लोप तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। बात समझे? एग्जैक्टली मैम, आपने नेगेटिव ऐसा ड्रा, मैम, हाँ, नेगेटिव स्लोप मतलब डिक्रीज। तो इसको होता है ना, तुम लोगों ने क्या ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है मैथ्स में? यस मैम। यस मैम, उसमें तो नेगेटिव स्लोप का मतलब ही ये होता है बेटा, उसमें तो नेगेटिव Yes, स्लोप ma'am. मतलब डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब ये स्लोप होता है, और डिक्रीजिंग का मतलब ही तो होता है नेगेटिव। इसमें क्या मैंने ऐसे ड्रॉ करा? नहीं ड्रॉ करा ना, ऐसे ड्रॉ नहीं करा, क्योंकि मैं नेगेटिव में नहीं ले रही हूँ। मैं तो नेगेटिव स्लोप मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग, मतलब बॉडी रेस्ट पे आ रहा है, बॉडी -20 वेलोसिटी पे नहीं जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड पे नहीं जा रहा है, बॉडी 20 पे था, उससे 0 पर आ रहा है धीरे धीरे। मेरे कहने का मतलब ये था, मैंने तो कभी भी नेगेटिव नहीं कहा। इज इट ठीक है पॉसिबल कि मैंने अगर पॉजिटिव एक्स और वाई एक्सिस लिया है, यहाँ एक्स और वाई एक्सिस मैंने अगर पॉजिटिव लिया है, तो इज इट पॉसिबल कि अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूंगी तो ये वाला एरिया नेगेटिव होना पॉसिबल है? क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव में है ना बेटा। ओके मैम, ओके समझ गए। बात समझ में आई उत्सव? मैम इसको एक बार बुक खोल के क्वेश्चन और ग्राफ दोनों देखना चाहिए, तब इसको पता चलेगा। उत्सव रुको रुको, उसको एक बार क्लियर होने दो कि वो क्या कहना चाह रहा था। मैं समझा पाई अपना बात जो मैं कह रही थी उत्सव? यस मैम, यस मैम। पक्का? कोई डाउट तो फिर से पूछो, मैं फिर बताऊंगी इसको। नो मैम, इट्स क्लियर। पक्का क्लियर हो गया? यस मैम। बाप रे, कितना टाइम निकल गया, 4:18 हो गया। मैंने सोचा था कि आज मैं इसको समझा दूंगी। मैम फुल आधा घंटा वेस्ट किया है ये बेकार का चीज में। हाँ, सिर्फ उल्टा चीज ही पूछता है ये उत्सव। वो भी रॉन्ग क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, उसका डाउट था इसलिए उसने पूछा। मैं तो शुरू नहीं कर पाई। मैम ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये लगभग चौथा या पांचवा बार थी। Yes. मैम ये हमेशा उल्टा पूछता है। उल्टा से चीज सोचता है फिर क्वेश्चन करता है ये लड़का। के लिए तो कम से कम हम लोग को फुल ग्राफ चाहिए 4 क्वार्टर्स का, तब जाके बना पाएंगे। वो उसके मन में डाउट था इसलिए उसने पूछा। अब बताओ मैं क्या पढ़ाऊं? 10 मिनट मेरे पास बचा है टाइम, एंड आई एम हैविंग ओनली 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में क्या पढ़ूं तुम लोगों को? मैम पूछ लूं मैं? हाँ बोलो बोलो, और कुछ बोल रही थी। हाँ बोलो। Ma'am, if the slope is negative, then what will we write after that? At that time, everyone will hear it. वो नहीं लिखा, मैंने लिखाया नहीं। और स्लोप इज नेगेटिव, बॉडी लिखा था बेटा, कहीं लिखा तो था, और को मैं लिख दे रही हूँ। दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है। Body is returning towards its starting point. आशनी हुआ? Yes, Miss, complete. Miss, मेरा नाम आयशानी नहीं है, it's ओइशानी. Miss, you can pronounce I. क्या? Miss, it will be better if you pronounce with OI, then it will be ओइशानी. ओइशानी, but it's written AI ना? Ma'am in Bengal Yes. A becomes O. Yes. Oh, Yes. Miss, it's ओइशानी. Oishani. Sorry for the mispronunciation. I'll try to correct it. Okay. Miss, Oishani. can call me Jhilmil. It's better. क्या? Miss Jhilmil, because many teacher in my school also pronounces my name wrong. Miss, my real name is Sayon, but everyone pronounce it Sayan.
Sayan, but my real name is Sayon. In Bengali pronunciation, your name should be pronounced as Sayon, and in Hindi or English pronunciation, your name should be pronounced as Sayan. हाँ भाई बेटा हाँ मेरे साथ भी My ऐसा name ही is है। Aditya, but when I came in Bengal, everyone called me Aditya. Yes, that happens in Bengali. Same Now happens Shreyas, with what is your name? Sorry. same happens with me too. My name is Anjana. People pronounce with me as Sanjana. Okay. I am also the same sufferer. There are the pronunciation differences with the region. ऐसा कुछ नहीं। ऐसा मुझे बताओ मैं आगे पढ़ाऊँ कैसे अब? I have only 5 to 10 minutes left. What would I start right now? Ma'am, शायद Now उतना भी Shreyas. time. हाँ Miss, only 8 minutes are left. हाँ तो क्या करूँ मैं शुरू कैसे करूँ क्योंकि अगर मैं शुरू करती हूँ तो I have चलो स्टेशनरी वाला करा दूँ क्या? मैम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. अच्छा लिखो तब एक काम करो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हेडिंग था ना उसके अंदर एक सब हेडिंग डालो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. Okay, Miss. मैम क्या चीज सब टॉपिक डालना? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. Ma'am, done. कैसे होगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसी को आइडिया है? उत्तर Miss, straight line parallel to the Ma'am. x-axis. Yes, ma'am. Parallel. 0. पक्का बनाओ इसको. Ma'am, I don't वो तो मूव ही नहीं कर रहा है. क्या मूव नहीं कर रहा है? मैम ऑब्जेक्ट. know. दिख नहीं रहा है क्या? मैम आदित्य बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर. ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट तो मूव नहीं करेगा. ये हुआ तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. बनाया सबने? यस मैम. कर रहा है. किसी को कोई Ma'am, डाउट है? below हाँ मैम 40 का नीचे वो क्या है? 40 का है बेटा. ये दिस इज 20 Yes, 40 60 80 इंटरवल्स है. फिर यहाँ पर यहाँ 0 नहीं देना था ना यार. यहाँ था 10 20 30 40 और ये रहा 0. ओके बना सबका? और इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का. उत्सव No, ma'am, it's clear. बेटा कोई डाउट नहीं है ना? No, ma'am. आदित्य नो मैम. ओइशानी yes, ma'am. No, ma'am. और कौन I'm है? sorry for the my mic was not being unmute. इट्स ओके. मिहुल No, ma'am. राजश्री No, ma'am. And ma'am, it is Rajoshi, not Rajeshi. अच्छा ओके राजश्री. ओके सायन सॉरी सायोन Sayon, you there or not?
I guess he is not present in the class. Yes, miss. Yes, miss. No doubt. Oh, Miss, okay, when clear? it is too poor. Okay, no problem. Shreyos, I'm only 4 minutes away. तो आगे पढ़ा भी नहीं पाऊंगी मैं. श्रेयोश, Miss clear. Miss clear. प्रत्युष, No doubt, ma'am. हेलो. पक्का किसी को डाउट नहीं है ना? डाउट होने से No, प्लीज मैम. कन्फ्रंट मी. ओके? No, Miss clear. मैम आज तो अच्छा. पढ़ाई एक पेज का हुआ. Yes, Miss. हाँ, क्या ही होगा. चलो, मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को क्या पढ़ना है? मतलब तुम्हारे सिलेबस थोड़ा पीछे रह गया है ना? तो अगर तुम लोगों का वीकेंड में अगर तुम्हारा फ्री है, अभी तो स्कूल नहीं है ना किसी का? No, Miss. नहीं मैम. वेकेशन चल रहा है. समर वेकेशन चल रहा है, तो क्या एक दिन वीकडेज में एक दिन मैं क्लास शेड्यूल कर लूं पढ़ाने के लिए? Yes, Yes, Miss. ma'am. No Yes, problem. ma'am. Yes. नो, किसने बोला? Miss, पर I said no problem. मिस पर टाइम देख लीजिए पहले. टाइम Miss, time should be in the morning because Miss in the evenings we have tuition. हाँ, मैं मॉर्निंग की बात कर I रही don't go to any हूँ. मॉर्निंग में 2 Okay. आवर 3 आवर जितना मन उतना ले लीजिए. Yes, Miss, Miss. In morning, no even 4 problem. hours or 5 hours. We will. 4 hours or 5 hours I cannot teach, dear, continuously. Miss, I'm not having a for course. continuous. Maximum 2 hours. Yes, No, miss, 3 hours. 3 Aditya, you will read 3 hours and I will read 2 I'm hours. having, listen guys, I'm having a throat. It's not a machine. I cannot speak out for continuous 3 to 4 hours, okay? Miss only I'll take your class. that. I'll take your class. Abhi to I cannot inform you right now, but in the weekdays only, in the morning shift only, I'll schedule your class and I'll let you know in your group, okay? 1 or 2 days in this coming today Sunday, na? From Monday to Friday in this weekdays only, I'll schedule a class and I'll let you know, okay? I guess no one has any problem because as far as I have seen, you are going a lot behind your syllabus. सिलेबस बहुत बड़ा है ना, आप लोग बहुत पीछे चल रहे हो. Yes, ma'am. तो फिर I'll schedule your class once in a week and I'll let you know in the group. ग्रुप में सब एडेड हो तुम? Yes, Yes, miss. Yes, miss. So I'll let you know guys in the group. And आज तो I guess अच्छा, everyone is making notes ना. I'll keep a check over it. नोट्स सबने बनाया है ना, मैंने जो भी लिखाया है? Yes, miss. ओके, चलो फिर लेट्स कंक्लूड द क्लास फॉर टुडे. ओके, क्लास में तो पढ़ाई हो नहीं पाई ज्यादा, बस ग्राफ के बारे में ही बता पाएंगे. ओके, लेट्स कंक्लूड इट फॉर टुडे. I'll take one more class in the weekdays. Okay, miss. Response, guys. Why are you muted? Everyone is being muted. Fine, Miss, ma'am. I don't problem. Speak out. Speak out. I love talkative class. Not talking amongst yourselves. Talk to me. I love Ma'am, that. we like offline classes. Yes, You miss. like Miss, offline class? Miss, in our class, when we were in KG or 1, Miss teacher says to us that we were very talkative. No, I like talkative class, but no, not the talkative in the sense of that you guys will talk amongst yourselves. Talk to me. Class 7, my section got the award of most talkative class from all the teachers. Okay, that's why you guys have learned not to Congratulations. speak, na? That's why you guys have learned not to speak. And everyone is muted here. Don't be muted. This is an online class, and as I told you, I cannot see your faces. I cannot read your facial expression. Please talk to Miss, Ma'am, me. from That next would time tell us we to can on our switch on video. videos. If you Yes, switch on your videos, na, there will be a lot of fluctuation in our class. Yes, Network we may suffer network in our problem. school, if you switch on, it doesn't
It's over there. Oishani, your network is making problem there. Voice is very much cracking. Your voice is shivering. Oh, आज okay. सब कुछ बिगाड़ती है. No problem. Let's meet you guys in the next class. Okay. Okay, miss. I hope you liked my class, my first class, and my first interaction with class 9 students. Chalo. Let's Good meet evening you. and thank you, ma'am. Bye, ma'am. And thank you, miss. Guys. Bye. Good evening and thank you, miss. Take care, guys. Bye bye.